just wait for a few minutes so that everyone can join in, and then we'll start the session. So before I start the session, I request everyone if you can type in the chat that, what would be your language preference? There are three options: Hindi, English, or Hinglish. So English or Hindi. Okay, English, Hindi, Hindi. Okay, okay. So I think we will keep the session a little mixed because there are audience which is both in Hindi and English, but the language will be simple. हम सरल भाषा का इस्तेमाल करेंगे ताकि दोनों तरह के ऑडियंस को समझ आ जाए, क्योंकि दोनों तरह के ऑडियंस है, तो हम चाहते नहीं है कि किसी को मिस हो। और क्योंकि हमारा प्रोग्राम भी जो है फाइनल, वो दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में है ऑप्शन, सो जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ओके, सो आई थिंक हम सेशन स्टार्ट करते हैं। I'll start the session now as people are joining in. So good afternoon, everyone. My name is Ankur Bhatia. I'm from the team Wellcure, and today's session is on millets. I'll quickly introduce about Wellcure. So Wellcure is a platform for all your holistic natural health and nutrition needs. We have now a community correction here, which is written on the slide, that we are now more than 2 lakh users. We have helped more than 2000 plus people to reverse their health problems naturally. And there are more than 150 programs which are there on our platform. And you will find programs which are health-based on diabetes, thyroid, hypertension, so all migraine, acidity. You will find programs on that, as well as programs related to cooking, which includes obviously millets, baking, healthy plant-based cooking, fermentation. So many programs are there, and there are new programs which are also in pipeline. So please visit our website or download our app, which is available on both the platforms. So now coming to today's masterclass, आज का जो session है वो millets के around है. So we will talk about what are millets, its health benefits, how to identify different millets, how to choose millet, and we will also play two recipe, one in Hindi and one in English. आज का प्रोग्राम मिलेट्स के ऊपर है, उसको उनके बारे में जितने मिथ्स हैं उनको कैसे चूज करना है, किस किस अलग अलग तरीके के मिलेट्स होते हैं, और उसके बारे में हम बताएंगे। और एक रेसिपी इंग्लिश में जो कि सोरगम इंडियन फुल्का, और एक रेसिपी हिंदी में हम आपको प्रीव्यू दिखाएंगे रेसिपीज का। So आज our program expert for today is Pallavi Upadhyay. So Pallavi Upadhyay is a co-founder and managing director for Millets for Health, which is a social enterprise which was founded in 2016, dedicated to promote millets among farmers as well as bring them to urban tables. So Pallavi बहुत wide scale पे, government level पे भी, और consumer level और farmer level, तीनों levels पे काम कर रही है इनकी organization। और इनका उद्देश्य ये है कि मिलेट्स जो है एक्सेसिबल बने और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे। So Pallavi, I would like to hand over the session to you today, given you a short on time, so we'll stick to that. I'll project the your PPT as well. Just hold on. Thank you, Ankur, for the lovely introduction. May I just request you to project the slide. Hi everyone, I am Pallavi. As Ankur has already introduced me, I'm the co-founder and managing director of Millets for Health, and I am here to take you through the millet journey today. Just before we begin, I'd like to share something very interesting with you. Today, I'm coming to you from a very interesting space. We are in a slum in South Delhi, and there is a whole event. It's a National Nutrition Month, Poshan Mah. So there's a whole event happening around nutrition and cooking competitions and everything. And millets are the central theme for the community here as well, because we are committed to promoting millets not just amongst the urban middle class, upper middle class, but also amongst the urban poor. We encourage them to go back to their villages, get millets from there if they can, and if they can't get it,
We provide the millets to the slum community and the women here at cost. And it's very interesting. The women have cooked up a storm. They're waiting. There's live cooking going on. We also have a chef who's be demonstrating a millet recipe to them today. So it's a very exciting program, and I'm very heartened to see so many wonderful things happening around millets. So that was the quick recap of what's happening here today. And now coming back to our main this thing, तो क्योंकि आज का सेशन हम लोग हिंदी और अंग्रेजी दोनों मिला के करेंगे, मैं कोशिश करूंगी कि मैं दोनों भाषाओं में का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करूं। मिलेट्स क्या है? व्हाट आर मिलेट्स? ये हमारे पुराने देसी अनाज हैं, ओल्ड इंडियन ग्रेन्स। ये 60 से 70 साल पहले बहुत हमारे खान पान में वो बहुत स्टेबल हुआ करते थे, और रोजमर्रा के खान पान में ये मिलेट्स का इस्तेमाल होता था। डे टू डे फूड्स वर मिलेट्स अबाउट 60 years ago, 70 years ago. But what has happened over time is that slowly they have inched out of our plates. धीरे धीरे हमारे खान पान से एकदम खत्म हो गए। क्यों? ग्रीन रेवोल्यूशन हुई, सरकार ने भी बहुत गेहूं और चावल को प्रमोट किया। उस समय के चैलेंजेस अलग थे, the challenges at that point of time were different. So just request everyone to, I'm going to try my best to address both languages because we have a variety of audience here today. Going forward later on, we may try to have different programs because our e-learning program is also now available in 2 languages, Hindi and English both. So you can opt, when you buy the program, you can opt for either Hindi or English. तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं दोनों भाषाओं में बात करने की कोशिश करूं, but just request everyone to be a little accommodative. I'll try to cover all the points in both the languages. So जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि गेहूं और चावल से कहीं ज्यादा मिलेट्स इस्तेमाल किए जाते थे, एंड धीरे धीरे वो हमारे खान पान से बाहर निकल गए. इनफैक्ट दे आर मोर स्टेपल्स फॉर अस देन than wheat and rice were, and the quantities that we were growing them were huge. Now they are much lesser. बहुत कम हो गया है वो इनका उपज, पर पिछले कुछ सालों में इसका एक ट्रेंड और रिवाइवल बहुत बड़ा है, और हम we are very encouraged to see that the trend is changing now. People are now wanting to learn more and more about millets. Next slide, please. तो ये आपके देखने के लिए है कि ये जब खेत में उगते हैं, how different grains they grow in the field. So you can see the stark difference between wheat, and then there's the first one, that's foxtail millet there. Then there's also sorghum or ज्वार. You can see in the picture. नीचे प्रोसो मिलेट भी है. तो ये चावल कैसा होता है, बार्ली कैसा है, गेहूं कैसा है. तो अलग अलग अनाज खेत में जब उगते हैं तो उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, कैसे वो दिखाई देते हैं. Just a pictorial representation for all of us to understand how they grow differently in the field. मिलेट्स जो है, 2 कैटेगरीज में मिलेट्स को बांटा जा सकता है. एक कैटेगरी होती है मेजर मिलेट्स एंड दूसरी कैटेगरी है माइनर मिलेट्स. हमारे देश में अभी 200 से अधिक, more than 200+ varieties of millets are there in the country. But इसमें से 9 varieties ऐसी हैं जो commercially available है. 9 varieties are commercially available. Out these 9 varieties can be categorized into 2, major millets and minor millets. तो major millet क्यों कहा जाता है इनको? मेजर मिलेट इसलिए कहा जाता था क्योंकि पहले यही ज्यादा उगाए जाते थे, ज्यादा क्वांटिटी में पूरे देश में ये मेजर मिलेट ज्यादा उगते थे, और ये थोड़े बड़े भी होते हैं साइज में. माइनर मिलेट्स वो होते थे जिनकी क्वांटिटी उगाने की भी कम होती थी और ये थोड़े छोटे भी होते हैं. ठीक है. अब दे वर ग्रोन इन अ लार्जर क्वांटिटी, माइनर मिलेट्स वर ग्रोन इन अ लेसर क्वांटिटी, मेजर मिलेट्स आर बिगर, माइनर मिलेट्स आर स्मॉलर. Now the other differences between major and minor millets, all major millets, they do not have an indigestible outer husk. So you can so there are 3 major millets in the category. 3 major millet हैं. इनका बाहर का छिलका जो है, मतलब हम ऐसा नहीं कि हम नहीं पचा सकते, हम पचा सकते हैं इसको, इंडाइजेस्टिबल नहीं होता है. ऊपर का हस्क इसमें नहीं होता है, खाली जैसे आपने पीछे फोटो देखी ना, खेत से उसी में से बाली में से निकाल के from the panicle the grains come out and then they can be directly cleaned and used. So ये जब मेजर मिलेट्स हैं वो है बाजरा, ज्वार एंड रागी और मड़ुआ. So finger millet, pearl millet and sorghum. These 3 are major millets. इनको डायरेक्टली इनका डायरेक्टली आटा बना सकते हैं, डायरेक्टली ग्राइंड इनटू फ्लावर और मीट प्रोसेस्ड इनटू अदर थिंग्स. माइनर मिलेट्स सब पे एक इनडाइजेस्टिबल सीड कोट होता है आउटर. उनमें क्या होता है कि उनका वो छिलका जो है, जैसे चावल का होता है, धान का चावल होता है, उसको कूट के छिलका निकालना पड़ता है. तो लाइक पैडी राइस, वी नीड टू रिमूव द आउटर हस्क एंड देन व्हाट वी गेट इनसाइड, जो अंदर होता है वो चावल के रूप में निकल
के आता है और उसको हम उबाल के चावल की तरह खा सकते हैं। तो बाहर वाला छिलका हम पचा नहीं सकते हैं, वी कैन नॉट डाइजेस्ट आउटर हस्क, इट हैज टू बी रिमूव। तो अगर जैसे आपको खाली छिलके वाला मिल रहा है और आप सोचे कि उसको हम आटा पीस के बना के और यूज कर सकते हैं, तो बहुत फाइबरस हो जाएगा आपके लिए। So we cannot use it like that. Even you cannot grind it into flour also. It has to be removed. The outer seed coat has to be removed. There are 6 types of minor millets: foxtail, little, kodo, proso, barnyard, brown top. Foxtail को बोलते हैं कंगनी, कोदो तो कोदो ही है, लिटिल मिलेट यानी कुटकी, बार्नयार्ड मतलब सामा, प्रोसो मतलब चीना और ब्राउन टॉप मतलब मकरा। तो ये जो है पूरे देश में अलग 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 नामों से जाने जाते थे और पूरे देश में ये उगाए जाते थे। तो ये रीजनल लैंग्वेजेस में नाम वगैरह हम लोग आपसे शेयर भी कर लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कैन आल्सो कम बैक, सो आई एम नॉट डन विद द डिफरेंसेस। तो ये क्योंकि मेजर मिलेट जो है ये प्रोसेसिंग इनकी आसान होती थी, तो इसलिए ज्यादा पॉपुलर थे, ज्यादा उगाए जाते थे, सो दे वर इजियर टू प्रोसेस। माइनर मिलेट्स का छिलका निकालना क्योंकि मशीन्स नहीं अवेलेबल थी, सो द मशीनरी वाज नॉट अवेलेबल, सो दे हैड टू बी हैंड पाउंडेड, हाथ से कूट के छिलका निकालना। सामा का कहा जाता है 7 भूसा, मतलब 7 लेयर्स इन सामा का चावल। So you know the drudgery of processing was really hard, and on the women and everybody was involved in the process, and so they became very unpopular. And then of course जब wheat और rice ज्यादा popular हो गया, easily available हो गया, तो एक upward mobility वाली बात होती थी, उनको ज्यादा refined सोचा जाता था, you know they were referred to as refined grains। तो लोगों ने धीरे धीरे वो छोड़ दिया खाना और इनको गेहूं और चावल को ज्यादा अपना लिया। हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम गेहूं, चावल, मैदा, सूजी ज्यादा खाते गए, वैसे वैसे हमारी बीमारियां भी बढ़ती गई हैं। तो जेनेटिकली जो है मिलेट्स हमारे डिस्पोजिशन को बेटर सूट करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। मिलेट्स क्यों फायदेमंद होते हैं? व्हाई आर दे यूजफुल फॉर अस? दे आर अ पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मतलब उसमें इतना न्यूट्रिशन होता है एज कंपेयर टू द प्रोसेस्ड व्हीट एंड राइस अवेलेबल इन द मार्केट राइट नाउ। मिलेट्स आर हाईली न्यूट्रिशियस and even as compared to many other forms of other types of rice and wheat as well, high in protein, high in calcium, B vitamins, iron, phosphorus, ये सारी चीजें मिलेट्स में बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आप 1 चम्मच मिलेट खा रहे हैं और 1 चम्मच धान का चावल खा रहे हैं, पैडी राइस खा रहे हैं, your difference in nutrition is significant in the same quantity. So you know millets are very very nutritious. Next slide please. क्यों खाना चाहिए मिलेट्स? मिलेट्स के हेल्थ बेनिफिट्स इमेंस हैं। पिछले 2-3 साल में तो इतनी स्टडीज आई हैं, so many studies have come out in the last 2-3 years that are talking about millets being beneficial for diabetes, blood pressure, just growth in children 50% more। बच्चे 1.5 गुना ज्यादा बढ़ते हैं अगर मिलेट बेस्ड डाइट पे रहें तो इससे आपका शुगर लेवल मैनेज करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, ये इसमें फाइबर इतना होता है तो डाइजेशन इंप्रूव करता है क्योंकि इसमें इनसॉल्युबल फाइबर होता है जो कि हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत यूजफुल होता है। तो वो एक बहुत फायदेमंद चीज है। वेट लॉस में ये मदद करता है, बॉडी के टिश्यूज रिपेयर करता है। इसमें ये एल्कलाइन है, सारे के सारे मिलेट्स एल्कलाइन होते हैं, तो ये कैंसर हीलिंग भी है। और सीलियाक और आईबीएस वालों के लिए क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री है, तो ये बहुत ही यूजफुल है फॉर पीपल हु सफर फ्रॉम सीलियाक एंड आईबीएस, irritable bowel syndrome or any other gut immune autoimmune sort of diseases also. Millets are very very useful. Next slide please. तो ये मेजर मिलेट्स की फोटो है। ये आपका हो गया बाजरा, ज्वार और रागी। रागी कनाडा नाम है, अंग्रेजी में इसको फिंगर मिलेट कहते हैं और हिंदी में मड़ुआ कहते हैं। So these are major millets. ये as it is directly we can grind them into flour, make it to dalia or process them further. Next slide please. This is an example of a minor millet. तो ये little millet है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे that little millet with the seed is on the left, and on the right you see after the hulling has been done, the husk has been removed, there's a little millet after it's been hulled. Somebody asked about barley. Barley is not a millet. Only the ones that we are covering today are millets. Barley को जौ बोलते हैं, उसमें gluten होता है। Barley has gluten, although it's a great grain, but it's not a millet. Okay. So nutrient value, millets क्यों खाना चाहिए? जो हम पहले भी बात कर रहे थे, तो ब्लड शुगर कम करता है, फाइबर में ज्यादा होता है, ग्लूटेन फ्री होता है, एल्कलाइन होता है। सारे के सारे मिलेट्स की क्वालिटी होती है। अलग अलग मिलेट्स में अलग अलग न्यूट्रिशन हाई होता है। रागी is higher in calcium, foxtail millet is high in protein. So many times people ask me which is the best. There is no one millet which is the best. If you're including them in your diet, you must have a mix of different types of millets
have one day, have one another day, and that way you're exposing your body to a diverse variety of nutrients. And diet diversity equals nutrition diversity, which also helps in absorption of different nutrients from different kinds of food. So this is very, very useful when it comes to millets. Next, yeah. So when we are looking at nutrition in millets versus grains, you can just see the comparison with wheat and rice and how much more nutritious millets are. Even the fiber content, you can see that it goes to almost double digits, and wheat and rice are at 2 and 1. So the fiber to carb ratio millets में जो है वो बहुत बढ़िया है. और अभी किसी ने ओल्ड पीपल की बात करी क्योंकि मिलेट्स एल्कलाइन होते हैं. इनफैक्ट ये ज्यादा इजीली डाइजेस्टेबल है. कुछ प्रिकॉशंस हैं जो मिलेट खाते वक्त हमें लेने की जरूरत है. कम क्वांटिटी खानी चाहिए क्योंकि फाइबर ज्यादा है, कम में आपको ज्यादा न्यूट्रिशन, ज्यादा ताकत, ज्यादा सब कुछ देते हैं. सो बिकॉज पीपल डोंट टेक दीज प्रिकॉशंस, दैट्स व्हाई द प्रॉब्लम्स अकर. इन आवर ई लर्निंग कोर्स, जो हमारा मिलेट का ई लर्निंग कोर्स है, उसमें ऐसे बहुत सारे सवालों को, मिसकंसेप्शंस को हमने एड्रेस करने का कोशिश किया है. और जैसा कि हम आपको शुरू से भी बता रहे हैं कि अब इस महीने से हमारे पास ई लर्निंग कोर्स हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है. सो बोथ लैंग्वेजेस वी हैव द कोर्स, and we have tried to answer a lot of these questions. So everything that we may not be able to cover today, you can also learn recipes and all of that. So किसको खाना चाहिए मिलेट? कोई भी खा सकता है, सबके लिए बेनिफिशियल है. महिलाएं एक सर्टेन एज के बाद आप कैल्शियम पिल्स खाने लगती हैं, आयरन पिल्स खाने लगती हैं. अगर आप मिलेट्स अपने खाने में इंक्लूड करें तो it can be really really useful for you. For you don't need to pop like separate supplements. For adults, it improves immunity, it helps in weight management. It makes because for the elderly, it does make the meal light and healthy. For younger children and infants, it helps them in their growth. Like I said, there are studies. एक स्टडी आई थी 2019 में जिसने प्रूव किया था. 600 बच्चों की स्टडी थी, इसमें से 300 को मिलेट बेस्ड डाइट पे रखा गया था, 300 को नॉर्मल खाने पे रखा गया था. तो ये जो है जो बच्चे मिलेट वाले खाने खा रहे थे वो 1.5 गुना ज्यादा बढ़े थे. So it boosts growth in children, and literally for young kids, I recommend we start including it to them at a very young age. Why? Because it's literally, they become what they eat. So it's very, very important that we feed them the right, potent, nutritious stuff. Next slide, please. Tips to buy the right quality. Somebody was asking about packets and they are expired and all that. So, we're talking about tips to buy the right quality. Next slide. One very, very important thing when it comes to buying right quality millets is that you should never buy polished millets. पॉलिश्ड मिलेट जो है कभी नहीं खरीदना चाहिए. पॉलिश्ड मिलेट जो है सफेद होता है रंग में. स्पेशली लिटिल मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट और कोदो मिलेट, ये तीनों पॉलिश्ड ज्यादा बिकते हैं. और पॉलिश्ड में क्या होता है ना कि बहुत बार जैसे व्रत के टाइम पे आप सामा का चावल बहुत सारे लोग खाते हैं जो कि बार्नयार्ड मिलेट होता है. आपको नॉर्मली ये सफेद रंग का मिलेगा. आपको नहीं पता है कि आप सामा खा रहे हैं या कुछ और खा रहे हैं. ठीक है. तो क्योंकि ये कोदो को भी पॉलिश करके सामा बना के बेच देते हैं, लिटिल मिलेट को भी पॉलिश करके सामा बना के बेच देते हैं, और बहुत बार तो उसमें चावल भी मिला हुआ रहता है. अगर आप अनपॉलिश्ड मिलेट खाएंगे तो एक्चुअली में आपको पता चलेगा कि आप सामा खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं. आई विल रिपीट दिस पॉइंट इन इंग्लिश दैट इट्स so prone to contamination, especially during fasting time. Now Navratras are coming up. You will find there's a shortage of barnyard millet this year, but you will find the market flooded with barnyard millet. How? Because they polish any type of millet and push it off as barnyard millet. So you don't really know what the white millet, if you're eating, whether it is actually barnyard or not. So if the millet is polished, number one, it is devoid of the fiber content and the mineral content. So you're essentially just not really eating the millet for what it is supposed to be giving you. And also it is more prone to being adulterated. Maybe it's they're saying it's something else and it's something else. So millet should always be the brand content should be retained. So the hull needs to be removed, but the brand has to be retained. That's what's very important. So it has very distinctive color and shape. In the course we'll take you through recognizing different types of millets also with the pictures and everything. Next slide, please. So also very important, when you're buying millets, make sure that it's evenly dehulled. So if you see a lot of millet seeds like without dehulling in it, it might lead to digestion issues because we can't digest the hull. So your millet should be evenly dehulled. The percentage of the seed, if you see anything shiny in it, should not be more than 1 or 2%. So that's ideal. It should not be mixed with white rice. तो उसमें मतलब white rice का mixture नहीं होना चाहिए. Dehulling even होनी चाहिए. छिलका जो कह रहे थे हम, जो पहले जो छिलका बाहर वाला वो ज्यादा नहीं होना चाहिए मिलेट में.
क्योंकि फिर हम उसे पचा नहीं पाएंगे। इसमें कंकड़ पत्थर भी आपको देखने पड़ेंगे, बहुत इंफीरियर क्वालिटी लेने से कंकड़ पत्थर भी बहुत मिलते हैं, और व्हाइट राइस से भी कंटेमिनेशन होता है। ये किसी और ब्रांड का हमने लगभग 50-40 ग्राम में इतना निकला था। पॉलिश्ड मिलेट मिला हुआ था, चावल भी मिला हुआ था। ये इधर इधर देखेंगे अगर, ये जो है ये सीड्स है मिलेट्स की, ये भी मिली हुई थी, और कंकड़ पत्थर भी थे। सो यू हैव टू, व्हेन यू आर स्पेंडिंग योर मनी, you must make sure that you know exactly what you're buying. Rajgira is amaranth. It's a pseudo millet, but it's very, very nutritious. It has qualities of all the millets. Millets को पकाने में किस तरीके के challenges आते हैं? पानी कितना डालना चाहिए? कभी कभी हलवा जैसा पक जाता है, कभी कभी कच्चा रह जाता है। दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? आपका हलवा बनना चाहिए, कोई नहीं खाएगा घर में, ना कच्चा पकना चाहिए। पानी की क्वांटिटी अलग अलग मिलेट्स की होती है, हम एक स्लाइड में आपको बता देंगे। तो दैट इज वेरी क्रिटिकल. इट शुड नॉट बी soggy, it should not be undercooked either, because then undercooking will lead to digestion issues, and if it is mushy, then nobody really wants to eat it. You're anyway introducing something new to your family. We have to make sure that it's cooked right. हाँ, तो ये water quantity है, so we can share this with you later. Next, let's go back to that slide. कौन सा मिलेट किस चीज के लिए किस रेसिपी में बेटर सूटेड है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमें देखना कि जैसे हम अलग अलग टाइप के मिलेट पका रहे हैं, तो कुछ चीजों में प्रोसो मिलेट ज्यादा अच्छा पकता है, थोड़ा क्रीमी होता है फॉक्सटेल मिलेट। किसी डिश में कोरो मिलेट ज्यादा अच्छा पकता है। तो ये एक्सपीरियंस से आता है। पर जैसे कोर्स में हमने क्या किया है, मेरा तो 5-6 साल का एक्सपीरियंस है ही मिलेट्स पकाने का, उसको सिंथेसाइज करके कोर्स में आपको ये सारी रिकमेंडेशंस हम देते हैं। रोटी पकाने के लिए कितना पानी डालना चाहिए, रोटी पकाने की स्पेसिफिक टेक्निक्स होती है। सो व्हाट आई हैव डन इज synthesize my own learning and experiences over the past few years to help you figure out all of these questions in the course, because it does take some time, and it's a journey for everyone. It will take you time also, but what we have tried to do is make it simpler for you so that you don't waste your initial time. And sometimes what happens is that initially, if you don't get it right, people tend to get disheartened. So the course will help you with that. Next slide, please. So Kangani is foxtail millet. We just showed foxtail millet, and we have lots of foxtail millet recipes in the course also. Myths और facts है मिलेट से को लेके बहुत सारे कि बड़ा मुश्किल है पकाना। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैंने आपको शुरू में बताया, यहाँ हमारी सब में महिलाएं भी एकदम डल्ले सब मिलेट्स पका रही हैं, और बहुत बढ़िया बढ़िया डिशेस आज तो कुकिंग कंपटीशन में पका के लाई हैं। एक्सट्रीमली इजी टू कुक. You just need to know some basics. Millets are expensive. They are not really that expensive when you are comparing a lot of things. One is that a little millet expands to become a lot. So 3 times water, 2.5 times water, so it expands a lot. Even when you buy the millet rava, 5 times water, if you put half a cup, 3-4 people can easily eat in that. So that sort of has a cost, sort of this thing with it. The other thing is that you also need to eat a lesser quantity. कम खाना पड़ता है मिलेट को। तो जैसे अगर आप 2 कटोरी अगर चावल खाते हैं, तो आप 1 ही कटोरी मिलेट खाएंगे, क्योंकि कम में आपको ज्यादा न्यूट्रिशन, ज्यादा पेट भरना, ज्यादा सब कुछ होता है, ज्यादा देर तक एनर्जी भी रहती है। So you need to eat lesser also. So and of course the health benefits in the long term. तो ये सारी चीजें, हेल्थ बेनिफिट्स, और मिलेट जो ज्यादा फैलता है, it expands a lot, and you need to eat lesser. If you compare all of these things, they are not really that expensive. And yes, there is a price differential over time. जैसे जैसे लोग ज्यादा खाने लगेंगे, अब तो सरकार भी इतना प्रमोट कर रही है, government is promoting it so much, people will start eating it. It will, of course, demand and supply, and the market will set the prices right for everyone. It's not a poor man's food, it's everybody's food, and we need to make an effort to include it in our diets. It's not a fad. Millets are food. Millets are, ये हमारे देश की ये खाने की एक धरोहर है, जो कि हमारा रेगुलर खाना यही हुआ करता था। तो ये फैड नहीं है, ये कुछ फैशन नहीं है, ये जो है एक ऐसी चीज है जो अब इसको वापस हमारे खाने में आने की जरूरत है। तो बहुत लोगों को लगता है कि मिलेट्स हीट कॉज करते हैं। मिलेट्स बिल्कुल हीट नहीं कॉज करते हैं। इनको खाने का और पकाने का तरीका होना चाहिए। अनाज के ऊपर नहीं होता है हीट कॉज करना। होता क्या है कि आपके पकाने का तरीका सीजन वाइज होना चाहिए। सीजन के हिसाब से गर्मी में आप फर्मेंटेड ज्यादा खाएं, सर्दी में आप उसको और चीजों के साथ खाएं, थोड़ा फैट कंटेंट के साथ ज्यादा खाएं। So it depends on how you're cooking the millet. Cooking any grain in question causes heat or whatever. But at the end of the day, you know your body, so you should eat something and understand how it's impacting you. There's also a misconception that millets cause thyroid. That's not true. In fact, going on a millet-based gluten-free diet is beneficial for many people who have thyroid. It has been helped to reverse it for many people.
सो देयर आर लॉट ऑफ नेसेयर्स, इंटरनेट पे आप जाएंगे तो बहुत तरीके की जानकारी होती है, हर चीज पे उतना ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ऐसा थायराइड से कोई वो रिलेशन नहीं है। ग्लूटेन फ्री खाना तो इनफैक्ट थायराइड में बेनिफिशियल रहता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। क्या बना सकते हैं मिलेट से? कुछ भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप मिलेट से नहीं बना सकते हैं। आप बेकिंग कर सकते हैं, आप खीर बना सकते हैं, आप डोसा बना सकते हैं, आप बिरयानी बना सकते हैं, पुलाव बना सकते हैं, आप पापड़ खा सकते हैं। और अब तो क्या है, इतने स्टार्टअप्स हैं मार्केट में। हम लोग, हमारा ब्रांड है मिलेट्स फॉर हेल्थ, आप ऊपर ब्रांड का लोगो देख ही रहे होंगे। हम लोग पिछले 2016 से मिलेट्स पे काम कर रहे हैं और अभी 65 से ऊपर मिलेट के प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। और अलग अलग तरीके से, जैसे मिलेट का पोहा हो गया, सूजी हो गया, नूडल्स हो गया, ब्रेड हो गई, पापड़ हो गए, डोसा बैटर है, और होल मिलेट्स तो है ही, तो स्प्राउटेड मिलेट के आटे हैं। तो ये सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल है, हमारा ब्रांड भी देता है और वेलकेयर के थ्रू हम आपको अवेलेबल भी करवाते हैं। और आप जो है होल मिलेट्स को, मिलेट के आटे को अलग अलग तरीके से यूज करके किसी भी तरीके की डिश बना सकते हो। देयर इज नो चैलेंज एनी मोर ऑन व्हाट वी कैन कुक विद मिलेट्स। any sort of dietary or lifestyle you have, you can fit millets in anything. Whatever your meal preferences are, you can fit millets there. You just need to figure out the ways to do it. And of course our cooking course plus Millets for Health and Wellcure jointly bring you a lot of products which help fit into your lifestyle. So, Next slide, please. but yeah, I think we are done. We now have recipes. So there will be one recipe in Hindi and one in English. And Pallavi, there is one constant question which came in, was mixing of millets. Can you just comment on that? And rest of the question we'll take later. I'll comment on that. So Yeah. the thing is that, see, ideally, it's always ideal to have one grain at a time. Always. Because, digestion times of different foods and different grains are different. But if you find that it's a journey for your family, then you can start off with mixing one or two and then gradually try, all of a sudden, if you want to change things very suddenly for people, it's not always possible. So what you can do is, जैसे गेहूं में या किसी और चीज में अगर आप गेहूं खा रहे हैं तो एक दिन एक आटा मिला लिया, या दो तरीके के मिलेट्स मिला के आपने खा लिए, और धीरे धीरे आप मूव ऑन कर सकते हैं। हेल्थ जर्नी जो है हमेशा सबकी ग्रेजुअल होती है, बहुत सडन चेंजेस हमेशा सबके लिए पॉसिबल नहीं है। स्पेशली अगर हम हेल्दी खाना खाना चाह रहे हो तो धीरे धीरे भी आप मूव कर सकते हैं, ऐसे कि एक बार में एक ही टाइप का मिलेट खाएं। It doesn't need to be an abrupt thing, so you can move on to that. Great. So now we will play the recipe and then take rest of the questions, remaining questions after it. Yeah. So okay, it's 4:30. Yeah. Yeah. Ankur, just can we pause for a second? Yeah, sure. One question I just want to answer. See, whole millets, if they are processed well, they last for almost a year. तो जैसे मिलेट राइस है, अगर ऐसे आपका बाजरा, ज्वार और रागी आपने रखा है तो वो तो मतलब ज्वार शायद फिर भी जल्दी खराब हो जाए, कीड़े लग सकते हैं उसमें, बट वो मतलब कड़वा नहीं होता है, खराब नहीं होता है साबुत। और अगर जैसे डी हल्ड मिलेट्स हैं, अगर अच्छा क्वालिटी है डी हलिंग का, तो वो साल भर तक भी टिक सकते हैं, दे विल नॉट गेट स्पॉइल्ड। रागी अगर होल रागी है तो जल्दी खराब नहीं होगा। रागी का आटा, हाँ, 4 महीने के बियॉन्ड यू शुड नॉट बी ईटिंग एनी फ्लावर्स। So and you can have it to gain weight as well as lose weight, but you need to cook it differently and treat it differently. Thank you. Yeah, Anchal, now you can play the recipes. Okay, sir. Anchal, when you just pause, when you're sharing, just select the sound, that sound should be also there. When you click on the sound, when you click on the video, just select that the sound option also. Just a second, sir. Just a second. Yeah. No worries. So in the meanwhile, Pallavi, you can answer in a question in the meanwhile, so that we can save time. Are there any specific ones you want me to answer? Yeah. There are questions related to sprouting of millets. So which millets can be sprouted and which not, like. हाँ, तो स्प्राउटिंग में क्या है, we talked about major and minor millets.
Major millets, अरे ये वॉल्यूम क्यों नहीं आ रहा है? they हेलो, stay in seed form, so they can be sprouted. Anchal, can Minor you millets, because mute they are yourself? dehulled, they don't stay in seed form, so it is not, they cannot be sprouted. So ragi, bajra and jawar, they can be sprouted. तो ये मैं हिंदी में भी बताती हूँ, जैसे मेजर मिलेट्स जो हैं वो क्योंकि सीड फॉर्म में रहते हैं, तो कोई भी सीड फॉर्म में चीज रहेगी, होल रहेगी, तो वो आप सोक करके स्प्राउट कर सकते हैं। और अगर सीड फॉर्म में नहीं है, जैसे कि माइनर मिलेट्स हो गया, तो उनका छिलका निकल गया, तो उनको हम स्प्राउट नहीं कर सकते हैं। ये एक बेसिक डिफरेंस है। और एक और चीज किसी ने अभी पूछी थी, देखिए ब्रांड तो वी ट्राई टू ब्रिंग बेस्ट क्वालिटी मिलेट्स टू यूज, तो मिलेट्स फॉर हेल्थ एज अ ब्रांड यू कैन रिलाई ऑन अस टू ब्रिंग, यू नो, वी इन हमारे प्रोडक्ट्स में हम मैदा, जैसे अगर कोई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है तो मैदा, सफेद नमक, चीनी या कोई भी रिफाइंड तेल या इस तरह की चीज का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। We try to bring as clean as possible products to you, and all our products are either, so they are either unpolished millets or any flours or anything are made from unpolished millet flours, unpolished millets only. Yeah, we are also available on Amazon, and we are selling through the Wellcure website as well. तो अब हम बनाने जा रहे हैं मिलेट की खीर, और ये खीर जो है हम वीगन बनाएंगे, तो इसको बनाने का ढंग थोड़ा सा अलग होगा। इसके लिए पहले हम जो भी मिलेट इस्तेमाल कर रहे हैं उसका चावल पका लेंगे। तो आज के रेसिपी में मैं यूज़ कर रही हूँ कुटकी का चावल, ये हमने आधा कप लिया है, और ये धो के इसे छान के रखा हुआ है। ये क्योंकि खीर में बहुत अच्छे से पक जाता है, तो इसे प्री सोक करने की उतनी ज़रूरत नहीं है। इसको पकाने के लिए हमें चाहिए पानी, खांड, चीनी, गुड़, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें। खाली फ़र्क ये है कि अगर खांड और चीनी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप पहले डाल सकते हैं, गुड़ आपको डालना है तो आप उसे बाद में डालेंगे। फिर पिस्ता, टूटे हुए काजू, बादाम, इलायची पाउडर और कोकोनट मिल्क। तो मिल्क आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी प्लांट बेस्ड मिल्क यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो अब सबसे पहले हमें खीर बनाने के लिए मिलेट के चावल को पकाना होगा। क्योंकि हम कुटकी पका रहे हैं, तो मैंने आधा कप कुटकी लिया है, तो उसके लिए लगभग मुझे 1.25 कप के लगभग पानी चाहिए। कुटकी में 2.5 गुना पानी पड़ता है। पहले इस पानी को हम उबाल लेंगे। आप कुटकी को भिगा के भी रख सकते हैं पहले से, और उसी पानी में उबाल सकते हैं। अब पानी उबल गया हमारा, इसमें हम मिलेट डाल देंगे। इसे हमने पहले ही धो के छान लिया था, और गैस थोड़ी धीमी कर लेंगे। धीमी आंच पे इसे पकने देंगे। तो चावल हमारे पक गए हैं। अब इसमें जो है, क्योंकि नहीं हम कोकोनट मिल्क को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं कर सकते हैं, तो चावल के पकने के बाद हम इसमें मिल्क डालेंगे। और अब डाल के इसे हम थोड़ा सा पकाएंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी इलायची, तो ये हमने डाला इलायची पाउडर। और अब हम डालेंगे इसमें, मैं खांड यूज़ कर रही हूँ, तो थोड़ी खांड डालेंगे मीठे के लिए। आप कलरिंग के लिए इसमें केसर, गुलाब कुछ भी डाल सकते हैं। अगर आप गुड़ वाली बना रहे हैं खीर, तो खीर पकने के बाद एंड में, वैसे तो ये कोकोनट मिल्क है तो भी गुड़ हमेशा एंड में ही डालने से ठीक रहता है, तो खीर पकने के बाद एंड में आप गुड़ का पाउडर इसमें डाल सकते हैं। तो आपको और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि गुड़ का कलर ही इसको पूरा अच्छे से ओवर पावर कर लेता है, और बहुत बढ़िया सा सुंदर सा कलर हो जाता है। तो बस अब इसे थोड़ा सा पकने देंगे हम। तो हमारी खीर ये पक के अच्छी क्रीमी हो गई है। बहुत देर तक इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी ही देर में ये हमें अच्छा टेक्सचर दे देती है। अब इसे हम स्विच ऑफ करेंगे। देखिए इसका कितना बढ़िया क्रीमी टेक्सचर आया है। और इसमें हम ऊपर से अपने हिसाब से गार्निश कर सकते हैं। और ये
Yeah, until now you can play the second recipe. I think this is fine. So in the meanwhile, the next second recipe gets started. This recipe is using samak, the samak rice, right? And can it be made with any other millet, Pallavi? This recipe? So this recipe can be made with little millet or barnyard millet. Okay. And I mean, you can make it with any millet if you want to make any sort of kheer. But I always find that the smaller millets, the little millet, barnyard millet are the smallest. They tend to be best suited when it comes to desserts like kheer, etc. तो ये मतलब बना तो सकते हैं किसी भी चावल वाले वैरायटी से, जैसे जो डी हर्ड वाले हैं, माइनर मिलेट से किसी से भी खीर बन सकती है. But सामा और कुटकी, लिटिल मिलेट और बार्नयार्ड मिलेट बेस्ट रहते हैं. Okay, great. Yeah, now we'll play an English recipe, which is a fulka. Now, using the same batter, I'm also going to show you how to make another in Tamil, Paddu, in Andhra, and it's called by different names in different southern states. We are going to use a cast iron pan, and this has different, this is about 7 cavities, and this is what we are going to use to make the Paddu. I am going to add some things to this to make it a little more flavorful. So I'm adding salt, some turmeric. If you have access to fresh turmeric, you can even add grated turmeric to this. I'm going to add onions, so the batter is the same. We are just making other additions to this. It's the same batter that we used for making our ragi dosa. And dhania. Just going to mix the whole thing together. And we are heating up our paniyaram pan. These are fairly delicious. So these are the savory version that I'm making. You can even make a sweet version by adding jaggery and other things to it, to the mix. So this is our mix. It's slightly yellowish. You can even add green chilies to this if you want to make this spicy, or any other vegetables. If you're trying to hide vegetables and feed them to your children, this is also a good way of doing it. You can add grated veggies to this. Now in the paniyaram pan, I'm going to take about 1 spoon of oil and just a few drops in every cavity. It doesn't really need more than that. This pan is also an excellent way if you're making koftas and other things. This is a very, very good way to use very less oil and skip the deep frying. You can make your lauki, kela and all other koftas and other things in this pan as well. It's an excellent investment to have. So you get 2-3 different varieties. You get like a flat bottom one, which is what this is, and it works very well across induction. The other ones, they tend to wobble a bit, so try to get a flat bottom one. And when you look it up online, you will get a lot of non-stick varieties. Please don't buy them. Invest in a nice cast iron pan. It'll be for life. I have 2, so I have this and I have another one which my mother-in-law gave me, and it's been with her for forever. So it's a good investment to make. So I have to wait for the oil to heat up. So I'm just checking to see if the oil has heated up. Almost done. Take a small spoon for this and do leave a little bit of space. These are really delicious and an excellent way to feed.
this was on high heat till now, I'm just going to reduce the heat to a bit, cover it. To just turn them. You can also use a fork. This is one of those lemon cutting knives that I find very. Okay, so this is almost done. I'm going to just see that you can see that a little bit of the uncooked bit is remaining on top. So I'm going to turn it at this stage. If you can turn them even sooner than this, if you get so skilled at it, then you'll get really nice rounded ones. And a cast iron one, once it's seasoned, will not stick. The important thing is to learn how to manage the temperatures. So, it has to heat up and the oil has to be hot before you pour in your batter, and then you reduce the heat and cover it. So if the pan is not hot enough, and if you've done it before it's hot, then also it tends to stick. And do use the oil in this. So after the first one, you need to use very, very little. Even in the first one, you saw that I used only 1 spoon. It was not like a heaped spoon. It was not full. I used only 1 spoon for all the 7. So I'm gonna twist it around on the side, comes off, and then turn it. And I'm going to cook the other side as well, nice and crisp. And so when you see that only a little bit of uncooked is remaining on top, then you turn it, then it cooks all the way through. So there's nothing that's raw in this, and it tastes really, really good. Serve it with any chutney of choice. You can serve it with a peanut chutney, or it goes even with a green spicy chutney, a nariyal chutney. It's very, very delicious. So our paniyarams are cooked. Now we are quickly going to put them on our plates. What we usually do in our house is that the first day the batter is made, typically we use it to make idli, because idlis are best with freshly made batter and freshly ground and fermented batter. So the first day typically goes for idli. The second day, when the batter is a little sour, not a lot, we use it for dosa. And then the third day, when even the dosa will be more sour for our taste than we would like, then we use it to make the paniyarams. So, just use the same batter for all the 3 purposes as well. Thanks. I'll now quickly share about the I'll just share about the program, and then so that we can also leave. Is my screen visible okay? Or no? Just hold on. Yeah. So we have 2 programs. The first one is in English. In English, we have different modules. The fundamentals are covered, in which types of millet, history of millets, the health benefits, everything is being covered in the module 1. Then we have different, recipes modules, in which these are the recipes which we have covered in meal bowls, dosa and salad, ambali, pulao, paniyaram, pasta, salad, and Carnatic dosa. Then we have rotis and breads, in which fulka, akki roti, koba roti, and baked bread are covered. Then we have delicious dessert, in which shepherd's pie, chocolate cake, laddus, barfi, kheer, cookies, all these are covered in this. And besides that, you're getting bonus session recordings, which includes yummy snacks, sorghum chocolate bars, gluten-free millet crackers, gluten-free millet Maggi, tahiri, and crumble. These are the ones which are covered. And then South Indian cooking, we have dosa, idiyappam, bisabilappa, tamarind rice, and how to make batter. So the batter one and the is also, and dosa are already covered in the course, but these are like recordings, additional ones for the reference.
The Hindi module covers the fundamentals, all the types of millets and their health benefits and other aspects are covered. And these are the recipes in Hindi: upma, ambali, ragi malt, kheer, laddu. All, in fact, it has granola, ice cream, and pancakes. So it has a little different set of recipes. But idea is not about recipe. Idea is that we've chosen the recipe so that you are able to learn the technique. तो हमारा उद्देश्य ये है कि हिंदी प्रोग्राम में थोड़ी रेसिपी अलग है इंग्लिश प्रोग्राम से, बट वो सारी टेक्निक्स इन रेसिपीज के थ्रू कवर की गई है. एनीवन हु इज बाइंग द प्रोग्राम, जो भी एक प्रोग्राम खरीद रहे हैं, उनको हमने एलुमनाई ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप पे, जहां पे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जहां पे पल्लवी सारे क्वेश्चंस को आंसर करती है. उसके अलावा वी हैव प्रोडक्ट पैकेज. सो पल्लवी, कैन यू क्विकली कवर अबाउट द 2 पैकेजेस व्हिच वी हैव इफ पीपल वांट टू बाय? या श्योर. सो इसमें हम 2 प्रोडक्ट पैकेज दे रहे हैं अभी हमारे वेलक्योर के थ्रू. इसमें स्प्राउटेड ज्वार होगा. स्प्राउटेड ज्वार जो है, ज्वार में प्रोटीन बहुत हाई होता है और स्प्राउटेड ज्वार से प्रोटीन का डाइजेस्टिबिलिटी इंक्रीज होता है. सो दिस इज रियली गुड फॉर एनीबॉडी फॉर अ हाई प्रोटीन थिंग. फॉक्सटेल मिलेट है इसमें. इसको हम सैलेड में, अमली में, खीर में, इस टाइप की चीज में यूज कर सकते हैं. ज्वार फ्लावर से हम कुकीज, केक्स, मॉल्ट या छोटे बच्चों का खाना भी बना सकते हैं. स्प्राउटेड ज्वार से आप रोटी भी बना सकते हैं. बार्नयार्ड मिलेट का आटा जो है, ये अक्की रोटी की एक रेसिपी है हमारे उसमें, उसके लिए बहुत बढ़िया है. सो बार्नयार्ड मिलेट फ्लावर इज गुड फॉर दैट एंड यू कैन ऑल्सो यूज इट फॉर फास्टिंग. लिटिल मिलेट राइस, अगेन सैलेड, अमली, खीर, सूप, इस टाइप की चीजों के लिए यूज कर सकते हैं. तो ये पैकेज 1 में ये 4 प्रोडक्ट्स हैं. ये हमारा दूसरा पैकेज है. इसमें हमने थोड़े से अलग प्रोडक्ट्स रखने की कोशिश की है. जैसे कि किसी के घर में अब बच्चे जो हैं पास्ता या इस टाइप की चीजें खाना पसंद करें एंड यू डोंट वांट टू बाय देम, जो मार्केट वाला है वो आप नहीं खरीदना चाहते हैं. हमारे पास्ता में प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, मैदा नहीं है. ये मिलेट बेस्ड पास्ता है. इसमें मिलेट और गेहूं का मिक्सचर है, जिसमें कि इस वाले पास्ता में 50-50 मिलेट्स हैं. हमारा एक आध और पास्ता वेरिएंट्स हैं, उसमें 70-30 का भी मिक्सचर है, जो अब आने वाले हैं इस महीने. तो ये लिटिल मिलेट पास्ता है मैकरोनी शेप में. इसमें जैसा कि मैंने कहा, प्रिजर्वेटिव्स नहीं है और मैदा नहीं है. नो मैदा, नो प्रिजर्वेटिव्स इन आवर पास्ता. मिलेट का सत्तू है, ये बहुत वर्सेटाइल पाउडर है. इसको बहुत सारी चीजों के लिए, इसका लड्डू बना सकते हैं, इसका ड्रिंक बना सकते हैं, इसको आप किसी भी चीज में, स्मूदी में मिला के यूज कर सकते हैं. सो इट्स वेरी वेरी वर्सेटाइल, कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीपल थिंग्स एंड इट्स अ वेरी न्यूट्रिशियस थिंग. I mean, sometimes when I don't have time to cook in the morning, I just mix it in something and drink one full glass of sattu and I'm set for the next few hours and it's high energy also. हमने खाखरे भी दिए हैं आपको, एक ज्वार और एक रागी का खाखरा. इसमें कोदो मिलेट का पोहा है, मिक्स मिलेट खिचड़ी है और एक हमारा ग्लूटेन फ्री मिक्स मिलेट आटा है, जिसमें हमारा ज्वार और अमरंथ का मिक्सचर है. ये बहुत बढ़िया ग्लूटेन फ्री आटा है, इससे बहुत अच्छी रोटियां बनती हैं. खिचड़ी भी एक बहुत सुपर हिट प्रोडक्ट है. इट्स वन ऑफ आवर हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स. तो ये पैकेज 2 है. इसमें भी बहुत एक्साइटिंग चीजें हैं. Thanks, Pallavi. So Pallavi, have a flight to catch on. So thanks a lot, Pallavi, for giving the time today. Pallavi, आपका समय थोड़ा सा short है, but we will be there and answering all the questions. And if there is any question which is unanswered, Pallavi will let us know, and I will post that answer. So thanks a lot, Pallavi. Thank you, Ankur. And I was really glad to be here for the session today and see such enthusiastic participation. Sure. Thank you so much, everyone. Dhanyawad. Yeah. So now people who want to buy and explore the program. So each program you are getting a value worth more than 2,200, which includes there are 4 ebooks which are there, as well as the course value. But we are offering it only for $799, only for the people who are attending the webinar. So these are the books and the course which you are getting, and you're getting one additional book which is juices and smoothies. And if you want to buy with the product combo 1, which includes 4 products, the price is $999. This includes shipping charges. So you get e-learning, 4 ebooks, and the 4 products. And if you want to go for the combo 2, which includes the sattu, pasta, khakra combo, the price along with the program is $1499. And
So these are the prices. If you want to buy only product 1, then it's 299. If you want to buy with the program, then it is 79 is 1499. And if you want to buy only with the product, combo 2, then it is the only combo 2 is for 799. So these are the options which are available, and you can make payment on this GPay number and Paytm number, and this offer is only valid till this Friday, 23rd of September. So now we will be sharing the link in the WhatsApp group, and as well as we'll email it to you. तो हम ये सारा links और details share कर देंगे, तो आप वहां से उस चीज को खरीद सकते हैं. और there are a few people who are asking about the soaking and cooking time. We will post that in the group. Yes, Drupali, Pallavi has already answered the question that yes, it has the whole millets, which you buy, it can have a shelf life up to 9 months, even up to sometimes 12 months. And if preserved okay in a good decent temperature, not refrigeration is not required. And where the floors are there, up to 3 to 4 months is which is a fair time. There is Bindu, there is no restriction in terms of there are a lot of myths which are there. As we said that millets जो हैं वो कोई भी खा सकता है, whether it's a woman, children, elderly. It is good whether you want to gain weight, lose weight, diabetics, thyroid. There is absolutely no restriction unless until you have a very severe chronic disease and there are any severe food restrictions which are there, especially where grains are completely restricted, maybe in certain kidney conditions or advanced kidney condition. In that case, you can always take an opinion from the doctor, but there is no research which proves that it is not good for a specific condition. So, Payal, I don't know whether you are referring to you're referring to a course in live workshop, then it is different. In live workshop, they're usually 4 to 5 recipe covered. In this, you're getting 2 recordings of live workshop plus a full e-learning course, which are exclusive to the program. Yes, you can refrigerate for a long time, but always, prefer always prefer to have food which is fresh. Why, have so much of storage? The energy of the food is also, impacted. So, this is a completely, I don't know about this story and the research. Just to update you now, Government of India have formed a millet board, and now millet is being starting, the next year is dedicated to millets. So if at a government level, the complete initiative is there, and there is a lot of research to back it up. And traditionally, the majority of diet in our grains were anyway millets. So history, research, and the organizations, authorized government organization, are supporting it. So there is nothing to be concerned. Yeah, Payal, if you have already paid for the 999, then you have the access to the course. If not, you can just drop an email at elearning@wellcure.com. If you want to buy the recipe ebooks, see recipe, we are not selling course recipe ebooks. So that is only available with the course. The link is given. We have already posted the link. You can, as soon as you pay, within 24 hours, you will get the access. So Murali, I'll be happy if you can get a research paper on this. There is no research paper which proves that daily millet consumption can lead to iodine deficiency. So anything which, any claim, good or bad, needs to be backed up by clinical research. So if there is that's why, these diabetics or thyroid or iodine, they do not have any clinical trials to be done to prove this.
And in terms of the nutritional benefits, there is a lot of research which is available on government websites as well. You can download or you can search, and so that can be accessed easily. Yeah, Tani, we have posted the link in the WhatsApp group as well as here, and you can pay, and within 24 hours you will get the access. Here the link we have posted. So Hital, we are posting the link. If you once you choose the product and then or the combo, and you put in the address, and then it will be shipped to you within 5 to 7 days. It is usually there. So Tanishka or Anchal, can I request if you can post the WhatsApp group link? The few people who are not in the group. Yeah, Aisha, you can store millet flours in the refrigerator, so that is fine. Can increase the shelf life a bit, but as I said, always usually the quantities are not very high. Try and use which is fresher. The fresher the better, but yeah, you can, as I said, 3 to 4 months is very decent enough time to finish off the flours. No, Murali, there is no evidence which we can say that millet can cause gas problems. So any food which can cause, so there is always this misconception that a particular food causes anything. Body acts on food, not the other way around. So if you put a jeera on a tawa, because of jeera, the tawa will not get heated. A heated tawa will burn the jeera or any other item. This is an example. So that is there. Bindu, you will need an equipment to make a flour at home. You can't make it with your grinder and mixie. So if you need, you can buy a commercial or flour making, and then probably you can make a flour at home. Yeah, we are sharing the link, these combos. Yes, Kirti, there is no restriction. In fact, the rich nutrition which is there in all the millets, it can only help support during the pregnancy, where the nutritional requirements are relatively anyway higher. So Shilpi, that question was already covered, that there you can make multiple recipes, and we also showed the recipes which you can make, and in the program we have covered a recipe for each type of millet. So Murli, there is no evidence which is there. I'm sorry. If you can post the clinical research paper, we'll be happy to reconsider it. Thank you. So Payal, this is the same course. If you've already bought, then it's not required. If the Hindi course is different, it's a new share. Thanks, Gracie. Thanks a lot. So Kirti, ideally we do not recommend mixing of millet with rice. There is no good and bad. It's just that when we mix too many of varieties, you tend to lose the benefit, and it becomes a little harder to body to digest. If you're mixing grain within millets, you can mix. It's still okay, but going millets and grains, not for a regular use. So the course fee, I'll just revisit. It is, if you want to only buy the program, it is $799. If you want to go with combo 1, that means the product combo including shipping, it is $999. And if you want to go with combo 2, which is millet, sattu, pasta, and khakras, then that is $1499. This includes course, these 7 products, as well as shipping charges. I will post the link. So the price for Hindi and English is same. So Bindu, it is not recommended to mix millet with rice. Occasionally you can, but there is no recipe, nothing which we know of which can be made with mixing millet and with rice. You don't, it's like mixing wheat and rice. It's not recommended.
Yeah, you can make Kirti ragi dosa with ragi and urad dal. So Shilpi, it's not a duration of the course. These are, roughly around, you can say around 1.5 to 2 hours content will be there. Murli, then it is better do you ask the person who has posted the video. The botanically the millet and grains are different. So Jigna, there is no like a doctor's prescription, but when you are looking for general health benefits and lifestyle disorders, whether it is hypertension, diabetes, and any other or weight obesity, then millets definitely support the overall journey because of two reasons. First is they have a higher fiber content, which is good for gut, as well as it controls the glycemic load. That means the sugar release is slower, and third is the level of nutrition is very, very high. And one more point which people are not aware, millets are grown with they're very resistant crop, so they don't need much of fertilizer as well as pesticides, so they are naturally less toxic than rice and conventional grains I'm talking about. Yes, Shilpi, the books are included in 799. So all the little millets, Sumitra, are closest substitute to rice. So you can pick any little millet. They are the closest one to rice. And we have recipes related to this, like we have pulao in the English one. So Jigna, you can take any form of millets, but you can start with major millets. That will be a good start. Ragi is a good option to you. So Shilpi, this is a pre-recorded course. So as soon as you buy, you will get access within 24 hours. So Rajni, there is no particular recommendation for a millet. All the millets are good for diabetics. So Sonika, usually the ragi is said to be good for children. And I think ragi and barnyard millet are the ones you can start with children. You can use in ragi or jowar in terms of flour. And then you can make a ragi malt, which is very, very nutritious recipe for children. As well as you can use sattu. You can put it in smoothies or in drinks. Again, very good and very easy to take with children. We will be sharing the link where you can buy the product. So Shilpi, we have jowar flours and as well as barnyard flour and ragi flour. These are the usual flours which are available. We will share the recipe. So Rajni, again, I would not comment on any, there is no study or anything to link between any particular condition. There is no restriction. If you're suffering from any lifestyle diseases due to high nutrition and fiber, it will definitely support your healing journey. In terms of max protein content, I need to check which ones is higher, but I think it's ragi, but I need to still check. That table is there. We'll post that link. Right now, it's all online orders. The shipping is available all over India, and the prices which are shown include shipping anywhere you are ordering in India. Jackfruit is nothing related to millet. So we follow a whole plant-based system, so I can't comment on milk or curd, but there should not be any restriction. Yes, Jigna, pregnant women should take millets because of their higher nutrition. Sattu, not millet, flour, sattu, because sattu is roasted and then made into flour. So any sattu of little millet sattu you can put in smoothie. Yes, Payal, you can support millets for inflammations. We will share the water one. So great. I hope that people got value from their time. I'll just quickly run through that. What are the options? What will you get? This is the combo number 2. You get millet sattu, pasta, the flakes, as well as flour, mixed millet flour, and khakra. And the product package 1 includes little millet rice, fox millet rice, barnyard flour, and sprouted jowar flour. So these are the option product package 1.
And the e-learning course options is there in terms of Hindi and English. Both are available, where you can obviously use products on their own, but we have recipes related to each product in a platform for package 1. Package 2 is mostly you can do it by self, because it's pasta. The pasta recipe is there. You can just need to learn the sauce. Kakra and other things are more ready to eat on that. Great. So Kirti, I think you missed the recipe. The recipe which we made included the, it was made with coconut milk only. Great. Thanks, Kavita. Thanks a lot. Sonika, you can do major millets. You can be sprouted just like you do the regular sprouting. It's just that it takes a little bit more time to sprout. So in package 2, you get e-learning and the package 2 products with shipping. So that's what you can see on the screen. If you want to buy both the packages, we will share the price with you. Means both the packages and e-learning, we'll share the price also with you. So that would be roughly around 1799 if you want to go with all the 3 things, means package 1, 2, and the course. Great. So we'll conclude the session, and we're active on the WhatsApp group. You can ask the questions and we will be there to support you. Thank you. Thanks a lot for your time today. And we look forward for people to kickstart their millet journey.